देखो बेटा, इसमें क्या है, ट्रिगर की कोड। सो दिस ट्रिगर की कोड एक्चुअली वाज यूज्ड क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली टैली को खोल के लॉग इन करना है, राइट? टैली टू बी ओपन एंड लॉग्ड इन, ठीक है ना? Second is we wanted the data entry to be in the same way as done by a tally operator. That means as the tally operator is doing it, then that's what I use the trigger key code. Okay, and this I used it in, in this thing. So the trigger key code, where the code here is here. If I look at it here on above, 29.5 on above, on the right? So data this thing, इसमें आएगा ये trigger key code है. Okay. So this is exactly replicating. So when basically what it's doing is that on the system start, it calls the master function for, and then when it calls the master functions for, then it presses enter, and then it uses this key ds flow r. मतलब मुझे क्या करना है, रिसीवर पे जाना है. फिर ट्रिगर की क्या है, alt F3, control F3, right? And then I go to the second one. अभी मैं ऐसे करूंगा, देखो बेटा. I will close tally, right? And I say here enter. Yes, enter, 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 enter. ठीक है बेटा. Hmm? And then what I will do is, so what I need to do is, ये बेटा देखो ट्रिगर की कोड क्या हुआ. मैंने एक सिस्टम स्टार्ट किया, तो on system start I call the master function for, right? Full one, enter, 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 control Z. Okay, we'll do a different way here. Instead of this, what we will do is we call master function 3. So what it will do is it will open this particular company, right? It will press enter. It will automatically press the username and the password and then automatically do the extract, right? Now what I do is here, I say tally second. इसमें रोहित मैंने एक बैच फाइल भी बना दी थी. भी चल रहा है. This particular company, it is not going in. Sorry, but एक मिनट रुको. I thought I had it in the trigger की sample code to इस एक सेकंड इसकी बैच फाइल भी बनाई थी. I'm sorry रोहित, एक सेकंड. सोनी, ये मैंने बैच फाइल बनाई थी ना इसकी. That means it will automatically start what? This thing. Sorry beta, I made a fool of myself in this one. Just wait a second.
Wait, बेटा एक सेकंड ये देखो, सपोज आई रिमूव दिस, राइट, ट्रिगर की डी प्लस एस प्लस ओ प्लस आर। अच्छा ये नहीं किया है इसने, सैंपल टू एंटर मास्टर फंक्शन 4 like this on system start। ये बेटा क्या करेगा ऑटोमेटिकली, ये डी प्लस एस प्लस ओ प्लस आर ऑटोमेटिकली कर देगा। then alt F3 control F3, it'll automatically enter। done, sorry। फिर डेटा से कैसे डाला था, ये रहा, ये एक्सेल डेटा से गेटवे पे किया, पेमेंट एंट्री कंट्रोल 4। this is the button which is there, right? When I press this button, then automatically this machine enters the data। Are you getting from where I'm coming? नहीं आया समझ में? समझ आया बेटा? When I press this button, it is replicating the tally operator's work। So इसने बेटा ये किया कि जब मैंने ये बटन किया तो इसने इस की को बुलाया कंट्रोल 4। सो दिस इज द ट्रिगर की। तो पहले उसने क्या किया, वी पे किया क्लिक, वाउचर पे, फिर F5 पे गया विच इज द पेमेंट वाउचर, देन ही वेंट टू बैंक चार्जेस जो कि फर्स्ट हुआ है, फिर उसने एंटर 2 बार ही दबाया, देन ही प्रेस्ड 1000, फिर देन ही प्रेस्ड एंटर, देन ही प्रेस्ड एरो सिटी मोड विच इज हियर। ऑटोमेटेड डेटा एंट्री ना, you're रिप्लेसिंग द अकाउंट। डेटा बेटा एक्सेल से जा रहा है, ये वाला मैंने एक्सेल में स्टोर किया हुआ है। So if you see, I've taken this ODBC driver and I've put this master.xls, ये मैंने कर दिया। तो तुम अगर इधर देखोगे ना, C colon, if you see C colon master.xls, this is the, आप तुम्हें यहाँ पे एक master.xls की मिली। So I have got say a lot of these Excel transactions। तो सपोज आपका ये केस आता है कि आपको वहां पे यू वांट टू, आपके प्रोजेक्ट में आपको ये आता है कि भाई आपको ऑरिकल से डेटा डालना है, राइट। इस केस में अभी इसने ड्राइवर से नहीं किया, इधर इसमें जो है क्या किया कि जब मैंने ये किया तो ये उसने एक्शन ट्रिगर की कोड किया, बट व्हाट हैपेंस इज आई कैन लिंक इट अप विद एक्सेल, आई कैन वर्क दिस कलेक्शन एंड देन आई कैन लिंक इट अप विद एक्सेल। इस बैंक चार्जेस की जगह मैं एक्सेल की इनपुट डाल दूंगा। दिस इज बेसिकली सेइंग दैट यू डोंट नीड टू यूज the TDL code, you don't need to use the ODBC code, you can simply do it directly here। नहीं आया समझ में?
Let's suppose I go here, right? I press this voucher entry. So now it is simply following this set of trigger key codes. I don't need to press anything. So it's following this action. So similarly, you can take this data from Oracle and using the trigger key code, we can assign variables. We'll simply replicate how the data entry will happen using the tally keys and put the data into tally. We can even open tally. Are you getting from where I'm coming? हेलो, ये समझ में आया बेटा कि नहीं आया? सो दिस इज द ट्रिगर की कोड जिससे कि तुम्हारा जो है ये हो सकता है. You can actually even open the company, right? So what happens is, suppose I use a batch file here. नहीं, ये तो सैंपल इंसर्ट है. ये तो पाइथन से मैंने इंसर्ट की यूजिंग एक्सएमएल. ये अलग हो गई चीज. ये ट्रिगर की कोड से ऐसा यू कैन एक्चुअली इवन ओपन द कंपनी. वो मैं तुम्हें कोड बता दूंगा. क्लियर?